हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। मैं हूँ सारा हसनैन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जैसे हम हर हफ्ते नए नए ब्रांड्स के बारे में जानते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, इसी तरह से आज जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे उस ब्रांड को मैं बोलूँगी कि इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक ऑफ पाकिस्तान। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट JS बैंक। और JS बैंक से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनकी हेड ऑफ ब्रांड्स फ़ाइका मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइका, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ाइका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ब्रांड बोलता है, और आपसे हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं आज। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज वेल। ओके ग्रेट फ़ाइका, तो मैं आपको बता दी हूँ कि ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपके बारे में जानेंगे, आपकी कामयाबी का सफ़र, आपने कौन कौन सी कंपनीज में काम किया है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो आपके बारे में ऑल अबाउट यू, एंड देन वी विल टॉक अबाउट योर ब्रांड विच इज़ JS बैंक। तो आपने अपनी कामयाबी का सफ़र कहाँ से शुरू किया? अच्छा, माय फर्स्ट जॉब वाज बेसिकली इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके। बिफोर दैट मैंने क्योंकि फाइनेंस में मेजर किया हुआ था, तो मेरी इंटर्नशिप्स भी सारी फाइनेंशियल हाउसेज और में होती थी। ओके। सो माय फर्स्ट इंटर्नशिप इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाज एट सिल्क बैंक। ओके, तो एंड आपने बैंक से ही स्टार्ट किया? या सो यू कुड एक्चुअली से कि मैंने बैंक से ही शुरू किया। ओके एंड ग्रेट। व्हेन आई गॉट इनटू सिल्क बैंक बेसिकली, मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप इतना मज़ा आया कि इवेंचुअली उन्हीं की एक एजेंसी थी क्रिएटिव कियोस्क, मैं उनके पास चली गई। ओके। वहाँ पे मेरा फिर डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट हुआ, लाइक यू नो जनरली जो आप कम्युनिटी मैनेजमेंट करते हैं उस वक्त ईट हुए था जो आप आज फूड पैंडा जिसे कहते हैं। यस। सो दैट वाज वन ऑफ द ब्रांड्स दैट वी वर्कड ऑन एंड इट वाज लेकिन वेरी आपने अगर एक्साइटिंग टाइम्स। बैंक से स्टार्ट किया तो फिर आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्यों मूव किया? Honestly, because that was an internship, तो ओके। this was a job. That was, I mean, उस वक्त आप इतना सोच नहीं रहे होते ना कि मैं इस फील्ड में हूँ जो या भी उस यू गो विद इंडस्ट्री द में हूँ। फ्लो, जो भी आपकी Yeah, अपॉर्चुनिटीज yeah. आती हैं You're ओके। looking for your first job to land, basically. ओके। So that was what happened to me as well. ठीक है। After that, I went to e-commerce for a very long time, like good 4 years. I worked in e-commerce. 𝐁𝐀𝐍𝐿.com एक brand होता था. बिल्कुल, It was a TCS का जो जी, फेमस ये वो। yeah, it was a very big brand back in the day, and we had a lot of good times. I was one of the founding members of uh, the team that actually initiated the revamp of 𝐁𝐀𝐍𝐿. ओके, लवली। After that, I went to another e-commerce place. It was in the textile industry of Pakistan. वहाँ पर मैंने after 9 months I moved to banking industry. So Okay. Bank of Farah was my first bank. ओके। उसमें भी फिर आई वेंट टू डिजिटल बैंकिंग ग्रुप उनका, जिसमें मैं उनकी मोबाइल ऐप के ऊपर काम कर रही थी बेसिकली। ओके, तो मैं लवली। अल्फा ऐप। जी हाँ, अल्फा ऐप। सो उस पर अल्फा मॉल है, अगेन उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या। जिसके ऊपर हमने काम किया। एंड बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो नेचुरली इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यस, दैट्स वेरी ट्रू। या। सो वहाँ पर मैंने 1-2-3 साल गुजारे। उसके बाद फिर मैं जेएस बैंक में आई। तो जेएस बैंक में जब मैं आई थी तो मेरा पहला रोल ऐप के ऊपर ही काम करना था, जेएस मोबाइल ऐप के ऊपर। ओके। सो हमने रिवैम्प की, उसको नया ऐप लॉन्च किया, एंड इवेंचुअली फिर मेरा वहाँ से मूव हुआ डिजिटल मार्केटिंग में बैंक में। ओके। सो तब सब तक मैं फिर मार्केटिंग में ही काम कर रही हूँ। और the one thing that I like about marketing is that every day it's a new challenge. आप बोर नहीं होते, मतलब और जगह पे काम करते करते इवेंचुअली, स्पेशली मुझे लगता है अगर मैं अभी भी फाइनेंस में ही होती तो एवरी डे एक ही चीज़ कर करके फिर आप जो है ना वो एक रेगुलर वो बन जाता है। सो मार्केटिंग में आपको हर दिन एक नई चीज़ मिल रही होती है, नई, नॉट जस्ट कि आप नई कैंपेन्स पे काम कर रहे होते हैं, बट आपकी लर्निंग बहुत सारी होती है, बिकॉज व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स एवरी डे, यू आर ऑल्सो गेटिंग टू लर्न कि वो क्या कर रहे होते हैं, हाउ आर दे मेकिंग देयर प्रोडक्ट, एंड उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी। And marketing plays a very big role in creating product as well, because research तो आप ही initiate कर रहे होते हैं ना, आपको पता होता है कि इंडस्ट्री में लोगों को चाहिए क्या, तो फिर आप उसी की बेसिस पे आप वर्क बैक करके अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। सो यस, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। So right now you're very happy in your current role, और आप अपना काम बहुत enjoy कर रही हैं as compared to the previous jobs that you've done. Honestly, I would say मुझे हर जॉब में ही मज़ा आता था, तो I wouldn't say कि यही है, बिकॉज जब मैंने अपना करियर भी शुरू किया था ना, तो somebody had asked me कि it was probably my first internship at Chevron, so somebody had asked me कि आप जब आप ग्रेजुएट कर लेंगी तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो my answer to them was कि I want to work at a lot of different places. So I think I'm on the right path because I've worked in a lot of different industries, and
I've enjoyed all of them thoroughly. So आई थिंक इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इतने मल्टीपल एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं तो फाइनली आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि विच फील्ड आर यू एंजॉइंग द मोस्ट और किस फील्ड में फिर आप फर्दर ग्रो करना चाहते हैं. तो जिस तरह से आपने अपना करियर जर्नी एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर ई कॉमर्स और यू नो TCS की बात करें, ये वो a lot of these brands, these are the in things these days. आजकल इन्हीं चीज़ों का दौर है. तो आपने बहुत अर्ली स्टेज में यू वर ऑन द राइट ट्रैक, आई वुड से, कि जो डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, डिजिटल before you could say before it became a big thing, yes. I was already headed in the right direction, because I didn't know at that time that this will be the future basically. And But now that we're here, this we're is the saying present now. now it's the present, exactly. Yeah, which is amazing. So I would say good decisions overall. All right. So आपने banking में start जरूर किया as an intern, and then you moved to Bank Alpha and now JS Bank. So how do you think the banking industry different as compared to any other industry in which you have worked so far? अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो बैंकिंग में नहीं होते उन्हें लगता है कि बैंकिंग बहुत बोरिंग है, और उनको लगता है बैंकिंग की मार्केटिंग तो कुछ करती ही नहीं होगी, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आई वर्कड एट अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, सो आई कैन टेल यू कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप बना हुआ है. आजकल हमारे पास भी नेचुरली जेनजी काम कर रहे थे, तो उनकी भी tantrums exactly वही हैं जो कहीं और होते हैं. So naturally the more you work with younger people, उतना ही आपको जो है ना पता चल रहा होता है कि अब लोगों की डिमांड क्या है, like what do they want to do basically. So I would actually put it exactly the same way, that no, every day is very exciting for us at work. We do new things. We're working on campaigns that have never been done before in Pakistan. There are lots of firsts that are still left to be done in Pakistan. So boring तो कोई भी दिन नहीं होता हमारा. Every day is challenging and full of exciting work, new opportunities, new marketing mediums to explore. Yes. All right, listeners. तो हमारी बात हो रही है फ़ाइका मिर्ज़ा से, who is the head of brands at JS Bank. मैं हूँ सारा हसन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है. कुछ देर में आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, फ़ाइका से और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है फ़ाइका मिर्ज़ा, हेड ऑफ ब्रांड्स एट JS बैंक. मैं हूँ सारा हसन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़. और राइट फ़ाइका, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि JS बैंक के अब फ्यूचर फोकस कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे है? जैसे कि यू नो बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. आज के ज़माने में लोग ब्रांचेस नहीं जाते, ATMs को भी थोड़ा बहुत अवॉइड कर रहे होते हैं. जितना हो सकता है वो अपने डिजिटल ऐप से ही सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं. सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, JS बैंक के अब कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स पे फोकस है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस तरह उनकी हेल्प कर रहा है? So definitely हमारा भी काफ़ी फोकस है डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो भी है. फॉर इंस्टेंस हमारे पास JS Bot है, जिस पे आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारी डिटेल्स दे सकते हैं. इवन अगर आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए हो तो आप उसके ऊपर जाके आपको व्हाट्सएप पे मिल सकता है. वो आपको व्हाट्सएप पे लिटरली PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा. आपको अपनी अकाउंट में बैलेंस कितना है वो जानना है, क्रेडिट कार्ड का कितना बैलेंस है, बिल कितना है, आपको अपना अकाउंट खोलना है इनफैक्ट, तो आप अपना डिजिटल अकाउंट भी व्हाट्सएप के थ्रू खोल सकते हैं. सो दैट हैपेंस थ्रू JS Bot. That's amazing. जब हम डिजिटल अकाउंट की बात करते हैं तो हमारे पास JS Blink डिजिटल अकाउंट है, जिसमें आपने अपनी मोबाइल ऐप हमारी डाउनलोड की, JS मोबाइल, एंड उसके थ्रू आपने अपना डिटेल्स डाले और चूज़ की कि घर के पास कौन सी ब्रांच है, उस ब्रांच में आपका अकाउंट तो आपके ऐप के थ्रू खुल जाता है. सो अगेन इट्स अ सुपर कन्वीनियंट प्रोडक्ट कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. घर बैठे बैठे सारे products are available at your fingertips. Wonderful. And then for overseas Pakistanis, we have Roshan digital account. उसके ऊपर हम एक कैंपेन भी करने जा रहे हैं अभी. So again, Roshan digital के लिए भी it's very easy कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आपने हमारे आइदर मोबाइल ऐप पे जाके अकाउंट खोल लिया. अगर मोबाइल ऐप पे नहीं खोलना, आपको डेस्कटॉप पे खोलना है, तो हमारे पास वेबसाइट पोर्टल भी है जिसके ऊपर आप अकाउंट खोल सकते हैं RDA का. एंड अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप व्हाट्सएप के जो अभी हम जिस व्हाट्सएप बॉट की बात करें तो उसके थ्रू भी आप RDA का अकाउंट खोल सकते हैं. I think that's a great list of products that you have mentioned, और listeners को बताना चाहेंगे कि इन सारे products की details आपको JS बैंक की वेबसाइट और सोशल मीडिया पे ज़रूर मिलेगी. So get a hold of that information. Great. So फ़ाइका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब कम्युनिकेशंस बनाता है, एडवर्टाइजमेंट्स बनाता है, तो क्या माइंड में होता है when you're working on JS के digital products? Again, for us, the biggest challenge is connecting with the audience. Okay, what do they want to see? They don't want to see boring things anymore. So we've worked a lot on creating an identity for our digital products as well.
and back and forth करके now I believe we have finally come to an identity that we are at least happy with, and I hope our consumers can also give us feedback on it. How are they enjoying it, right? So this is how I would say, and also we have to make it more relatable, because जब हम digital products की बात करते हैं तो we're talking to certain segment, we're talking to millennials, we're talking to Gen Z, because they are more susceptible to accepting the usage of digital products. So our communication also has to be something that they are attracted to. यूजली क्या क्रिएटिव राउट लिया जाता है कि जैसे मार्केटिंग इज मेजरली अबाउट क्रिएटिविटी, कितनी क्रिएटिव एड्स, कोई रीसेंट कैंपेन जिसके बारे में आप मेंशन करें कि वेयर यू think you took a stand and made sure that the campaign was as creative as possible and nothing too run of the mill? I think that would be our personal own campaign that we've very recently done. अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको definitely ज़ैना मार्केट के ऊपर हमारा एक होर्डिंग नजर आएगा, which is the AI version of अदनान सिद्दीकी. Oh, wonderful. That's amazing. उसकी और आपको कराची में विजिबिलिटी थोड़ी टाइम में नजर आनी चाहिए, because अभी हमने कैंपेन लॉन्च की है तो उसकी क्रिएटिव्स पे काम चल रहा है. उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूट था, बिकॉज Adnan Siddiqui did our 2 DVCs for the personal उनकी campaign, and हमारी जो creative agency they came up with the idea of taking AI route for Adnan Siddiqui, and that AI route also tells you कि आप किस किस चीज़ों के लिए personal loan ले सकते हैं. So एक बड़ा अच्छा सा हमारा वो creative निकल के आया, and also because now is the time for AI and everyone is talking about it, and ChatGPT and Midjourney and using AI more in marketing. So I think we're the first ones in the banking industry who have used AI and taken it to such a big platform कि हमने उसकी कराची में हर जगह होर्डिंग्स भी लगाए हुए हैं, and not just कराची, actually लाहौर इस्लामाबाद में भी हैं, तो आपको वहाँ पे हमारी वो नजर आ रही होगी. That's amazing. That's so impressive, and I'm sure कि AI का यूसेज देख के डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट कंपेटिटर्स वुड टेक इनटू अकाउंट कि वो भी इसी तरह की एडवर्टाइजमेंट्स लाएं, बिकॉज ऑफ कोर्स जितना यूनिक एड हो उतना ज़्यादा उसका वर्ड ऑफ माउथ होता है, टॉप ऑफ माइंड होता है, a lot of things. So I think that's a great move from JS Bank, being the pioneers in using AI for their marketing campaigns. So commendable. Absolutely, yeah. All right, फाइका, so हमने JS के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली. मेरा नेक्स्ट सवाल होगा आपके बारे में कि आई एम श्योर बहुत बिजी स्केड्यूल होगा और इस बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल होगा, बट व्हेनेवर यू टेक आउट टाइम, व्हाट आर योर हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स, फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है, क्या मसरूफियात हैं? So I would say my biggest hobby is eating out. I love food and I love exploring new places and trying out new food. Apart from that, I also love reading. So I'm always reading one book or the other, and I personally prefer e-books क्योंकि मुझे फिर वो FOMO होने लगता है कि book अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे हाथ में नहीं चाहिए. So I generally use e-books, but I also love collecting books. So अगर कोई book मुझे बहुत अच्छी लग रही थी फिर मैं जाके उसका hard cover खरीदती हूँ कि मैं उसको अपने रूम में रखूँगी. Apart from that, I love working out, so on the weekends I'm swimming, and throughout the week I'm generally going to one trainer or the other and exploring that. I think that's a nice healthy routine that you're maintaining. Yeah. And it also helps me with my first hobby as well, that is eating out. So it sort of like balances the whole thing. Yeah. Oh, that's great to hear. I think very nice, interesting, and a great approach towards life, keeping a balance. Yeah. चले, ग्रेट, लवली टॉकिंग टू यू फाइका. और अब वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो, और अब मेरा होगा आपसे आखिरी सवाल, और वो ये है कि जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और जो फ्यूचर मार्केटर्स हैं, जो लोग मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? आई वुड से कि don't try to copy someone else's creativity, create your own route. Everyone has their own strengths, so figure out what your strength is and start playing to that. And also जब आप कोई भी अपना career शुरू करते हैं ना, तो the start of your career is all about hard work. जब आप hard work कर लेते हैं, आप किसी position पे आ जाते हैं, then your smart work starts. So don't get intimidated, explore your own route, figure out what your strengths are and play to that, because eventually आपकी strengths ही आपको आगे जाके पता चलेगा कि they make you a bigger person than what you are currently. Perfect. I think that's a brilliant message, and मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि पहले हार्ड वर्क पे फोकस करें and then स्मार्ट वर्क पे. I think that's the right approach towards life, जिस वजह से आप फिर एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल बन सकते हो and working on all your strengths. So a great message once again. Thank you so much, Faika, for joining us on Brand Bolta. It was wonderful having you on the show. Thank you. It was nice being here as well.
and all the Alright. best for your show. थैंक यू सो मच। और राइट लिसनर्स, तो आई होप आपको हमारी आज की एपिसोड अच्छी लगी। अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस। सो अपना कराची FM 107 के फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी। इसके साथ साथ मी सारा हसनैन, योर होस्ट ऑफ ब्रांड बोलता है, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बट मैं नेक्स्ट वीक ज़रूर आऊँगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए ब्रांड के साथ, ओनली ऑन अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़।